गाइस यार आज ना एक ऐसे बंदे की पोर्ट्रेट बना रहा हूँ जो मेरे हाफ एज का है। अब किस लिए बना रहा हूँ? क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, इसलिए दोस्तों। एक्चुअली मैं अपने बंगाली ब्रदर सुभजीत मंडल की ही बात कर रहा हूँ। सुभजीत ने अपने हार्ड वर्किंग स्किल और आर्ट से ना दोस्तों यूट्यूब पे एक अच्छे मुकाम पे पहुँच चुके हैं। सुभजीत हे बड़ी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कहना चाहूँगा कि दिल से ख्वाहिश है दादा के कि आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत जल्द पूरी हो, यूट्यूब पे एक और भी अच्छे लेवल पे आप पहुँचो, ये मेरी दिल से ख्वाहिश है। और दादा के लिए एक छोटा सा कमेंट हो सके तो ज़रूर कर देना, ओके। I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, दोस्तों शुभजीत की ये फ़ोटो मैंने रेफरेंस के तौर पे ली है। अभी इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि शुभजीत एक पेन वर्क में बिजी है, जो कि एक फाइन आर्ट वर्क है। तो इसी आर्ट वर्क को मुझे भी दिखाना होगा और मैं चाहता हूँ कि ये आर्ट वर्क भी मैं पेन से ही करूँ, ताकि ओरिजिनलिटी जो है वो सही रहे। ओके, तो आप देखते जाओ।
तो शुभजीत का पोर्ट्रेट लगभग कंप्लीट होने ही वाला है और आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन मैं देना चाहूँगा कि इस पेंटिंग को करते हुए ना मुझे 70 to 80% सेटिस्फेक्शन मिला है। ऐसा क्यों है दोस्तों, सेटिस्फेक्शन लेवल इतना कम क्यों है? इसका जो स्केच है ना वो मैंने की है ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए। अगर ग्रिड मेथड का इस्तेमाल मैं करता तो सिमिलरिटीज़ और भी खास होता दोस्तों। खैर ऑब्जर्वेशन मेथड जो है उसका कुछ प्लस पॉइंट भी है, कुछ माइनस पॉइंट भी है। बाद में इसके बारे में और भी डिस्कस करूँगा। मिलता हूँ ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग सा पेंटिंग या फिर ड्राइंग रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना और कीप प्रैक्टिसिंग दोस्तों।